already prepared the slides, but I am facing little. Now the slide is visible to you? No. No, sir. No, sir. No, sir. Sir, I think there are some likely and technical error. So just continue if site is not visible. No, it is showing in my mobile set that slide is shared, but how is not visible to you? No, I think there might be option of screen sharing. Yes, that screen sharing option is there, and I have already opted for that. But why it is not visible? Yes, So yes, now now it's visible, sir. Now it is visible. Now it's visible. Now it's visible, sir. Visible? Yes, yes, sir. Now it's visible. Yes, yes. Okay. So actually the slide is not visible. The thing is happened that when that means what my laptop is there and I am showing the mobile to the laptop. Okay, in this way I have to manage. Okay, don't worry. We'll able to manage it. Actually, this is purely regarding your Sales of Goods Act, in which we had discussed in the previous class. A few things we need to discuss. That is regarding modes of a delivery, which I had discussed. Someone had asked one doubt. I told you that there are what are different modes of a delivery. One is your actual delivery, another is your symbolic delivery, and another is your that is constructive delivery, right? And Sir, good morning, sir. Actually, this is which chapter? Sales of Goods Act. That is chapter number. Yes, yes. There is share the slide, sir. Till Actually, I am not able to share the slides. Actually, I am showing the mobile to my laptop. This is in the laptop, and I am showing to this. Right? No, sir, it is chapter number. It is what under the Sales of Goods Act. Your Sales of the Goods Act, perhaps it is in your Unit 3. Unit 2. Unit 2. No, it is in Unit 2, right? Okay. So in the Sales of Goods Act, in the last class, actually we had discussed regarding the various modes of delivery. Under that, you see the first two variety, that is actual delivery and a symbolic delivery, which I had discussed. And another one, somebody asked me in the last class. Actually, he was not able to understand who asked exactly. I cannot remember. But somebody asked me regarding the third variety, that is constructive delivery. Actually, what is constructive delivery? In this particularly, you see when the delivery is made without any change in the actual possession of the goods. That means there will be no actual possession of the goods. That means no change in the actual possession. That is why it is called. Sir, excuse me, sir. Your screen is visible. I think you might be not. Your only your wallpaper is visible of your mobile wallpaper. Yes, yes. Sir, your screen is visible, but your PPT is not. I think might be visible because you are only sharing your mobile screen wallpaper only. Mobile screen. I am watching the same. I don't know what the other guys are seeing. Ah. So, guys, please confirm. No, now actually I am facing little difficulty in sharing the slides. That is why I am showing this to my laptop, and this what PPT is in the laptop, right?
Okay, PPT is in your laptop, right? PPT is in the laptop, and as I am facing little difficulty in sharing the slides, that is why I am showing the slides to the my mobile, and through the mobile actually I am taking the class, Okay, right? sir. Okay, sir. Okay, Sir, sir. Just carry on. in that case, you might need to turn on the video so that we see the PPT from mobile. So it's Uh, okay. Let us try. sir, or else if you can do one more thing, like you can share the PPT on the chat window, then probably one of us can share our screen. Mm, ବେଟର ହବ ସାର୍ ଆପଣ ପିପିଟି ଟାକୁ ମୋବାଇଲ କୁ ଆଣି ଆସନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି okay. Now is it visible? Yes, sir. Can you show your phone now? Uh-huh. There is the chat, then store. Documents. Is the PPT now visible? Because I have already shared it. Sure. Is it visible now? నో సార్ సిన్ని సార్ విజువల్ No, sir. I have turned on the video, and again I have also shared this. ସାର୍ ରୋଟେଟ୍ ୟୋର କ୍ୟାମେରା ସାର୍ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାଟା ଅଛି ତ କାହିଁକି ଦେଖା ଯାଉନି କ୍ୟାମେରାଟା ରୋଟେଟ୍ ହବ Camera will be rotated. Camera will be rotated. There is no option. Captions, whiteboard. Just a minute. There is no option for rotation of the camera. Sir, back camera कर दियो ଆସିଯିବ। Okay. Sir, ଆପଣଙ୍କ laptop ରେ internet ଅଛି? Yes, that's Sir, it. ମତେ sir ମୋ mail ID ଟିକେ mail କରିଦେବି ଯଦି ମୁଁ screen share କରିଦେବି। PPT ଟା। Mail ID. My email ID is amlanpanda2007 @gmail.com. Amlan Panda 2007 amlanpanda2007 @gmail.com. sir ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ mail କରୁଛି ଆପଣ PPT ଟା ସେଇଥିରେ share କରିଦିଅନ୍ତୁ। Okay.
Now I will send it in the mail. Yes, sir. So पठाइदेले मु शेयर कर दिए आपको शेयर कर Okay, just a minute. That means I have to open the mail. Okay, sir. Satya Sundar Das. Yes, sir. See, I have already sent both the PPTs. One is SOG and another is Unit 5. Okay, sir. I haven't received it yet, so yeah, one second. Yeah, got it. So which one you want me to share? First you open this SOG. Okay. Hope it's visible. Is it visible? Yes, yes. Is the slide visible now? Yes, sir. Okay. So actually we are we are discussing regarding the modes of a delivery. In the modes of a delivery, I discussed two varieties of two modes. One is a actual delivery and another is a symbolic delivery, and the last one is your constructive delivery. So actual delivery and symbolic delivery, these two deliveries I have already made you understand, and we'll discuss regarding the constructive delivery. Uh, So a constructive delivery, actually here what is happens, there will be no change in the position of the goods. That is why it is called a PTTS delivery. How it is not how the actual change of the position of the goods never happens. You see these three instances I have given. First, where the seller in possession of the goods agrees to hold them on behalf of the buyer after the sale, right? Here what is happening, the seller, he is in the possession of the goods and agrees to hold them on behalf of the buyer even after the sale. That means a physical transfer of the goods will not be there, but the delivery will be made. If the delivery will be made, that means it is a fictitious delivery. That means no delivery has been made. But in the paperwork, or if you will consider what a contractual relationship, the delivery is made. But actually, there is no delivery of the goods. It is one instance, and another instance where the buyer is in possession of the goods and before the sale, and the seller agrees to the buyers holding the goods as owner, right? Now what is happen,
the sales there is a contract of a sale, and the buyer already purchased the goods, and he holds the good till the sale is over. That means unless the party will give any direction to sell it to the others, still this party will held the goods. Even after, before the sale, also the buyer purchases the goods. You understand? Before the sale, the buyer purchases the goods. That means after the sale, there is no necessity of transferring the goods. Physical transfer of goods is not required. Here already physically the goods are with the buyer, so there is no need of physical transfer or movement of the goods. This is another instance. And the third instance is that where a third party, suppose you can take the example of a warehouse keeper. Warehouse जो होता है उसका इंचार्ज होता है, who also agree with the seller that after agree with the seller or agree with the buyer that after the sale also he will hold them as the belly. That is, belly is a different type, bailment of a place when we'll discuss. At that time we'll discuss who shall be the belly, and here he will act as a belly. That means the physical what there is also no physical movement of the goods, but the delivery of the goods is possible. So these are the few cases of your constructive delivery. Now you are able to understand this. Is that audible to everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we have already, I think, discussed these warranties and conditions. Then there is what unpaid seller. Unpaid seller. Seller, you understand who is a seller? But unpaid seller means what? A person who sold the goods Sir, to. sir, good morning, sir. Good In morning. this Good. rules regarding delivery of goods, that so many things are not covered. Yes. What you are discussing, actually, last day I had gone through the syllabus, and I found actually that is not in your syllabus. As I have covered, so I need to complete only that part. But all the rules regarding the delivery of a goods is not in your syllabus. Please, you can go through the syllabus. I had gone through the syllabus, and that is why there is no necessity. That is why I also have not inculcated them in the PPT. Right. Then there is, we'll go to the unpaid seller. Unpaid seller, we'll discuss what is his rights of the unpaid seller. So who is a seller, but unpaid seller means a person who has sold the goods to another person but has not paid for the goods either partly or fully. Okay, either partly or fully. Then there is a defining section, that is according to section 45 subsection 1 of the Sales of Goods Act. So an unpaid seller is one who has not been paid the whole of the price of the goods he has supplied or has been partially paid for the goods. It is one instance. And the second, who has given a negotiable instrument like a bill of exchange, and that has been received as a conditional payment, and the condition on which it was received has not been fulfilled by the reason of the डिजनर. इसका मतलब वो चेक डिजनर हो गया. जैसे कि सपोज मैं आपको कोई प्रोडक्ट आपको बेचा, और जो प्रोडक्ट प्राइस के लिए आपसे एक बिल्स रिसीवेबल लिया. ये बिल्स रिसीवेबल चेक हो सकता है, प्रोमिसरी नोट हो सकता है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन क्या हुआ, वो जो ड्यू डेट में वो हो गया डिजनर. तो अभी डिजनर हो गया, इसका मतलब अब मैं पेमेंट नहीं हुआ. एबल टू अंडरस्टैंड? Am I Sir, और audible एक to? बार बोलिए सर. हाँ, अभी देखो क्या हो रहा है कि सपोज मैंने कुछ आपको कुछ बेचा है, ठीक है. अगर आपको कुछ बेचा है तो जो आप अगर मुझे पैसा दे दिया है तो ऑलरेडी पेड. अगर आपने पैसा नहीं दिया तो अनपेड सेलर हुआ. तो अनपेड सेलर पार्टली भी हो सकता है और फुली अनपेड भी हो सकता है.
ये एक इंस्टेंस है। दूसरा इंस्टेंस क्या है कि आपने सपोज कैश पेमेंट नहीं किया, तो आपने मुझे एक चेक दिया या कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, प्रॉमिसरी नोट दिया, ये सब कुछ दे दिया है, लेकिन वो जो दिया था, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो पीरियड था, इसका मतलब वो 15 डेज का या 20 डेज का था, लेकिन जो 15 और 20 डेज के बाद इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाता है। ऑन द डेट ऑफ द मैच्योरिटी एक्चुअली what these check or the bills of exchange or promissory note, it has been dishonored. डिसऑनर का क्राइटेरिया क्या, मैं तो पेमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिस्कशन किया था। डिसऑनर का क्या क्या रीजन हो सकता है, एक तो होता है मिसमैच ऑफ सिग्नेचर, दूसरा हो सकता है इनसफिशिएंट फंड, ये बताया था ना। सर हाँ, तो अभी क्या हुआ, इसी की किसी भी रीजन के वजह से अभी क्या हो रहा है कि ये आपका डिसऑनर हो जाता है। और डिसऑनर होने से क्या होता है, अभी इसका मतलब अगर डिसऑनर हो गया तो पेमेंट मुझे नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला इसका मतलब मैं अनपेड सेलर हो गया। समझ में आ रहा है? सर ओके, सो अभी अगर मैं अनपेड सेलर हो गया तो अनपेड सेलर के हिसाब से मेरा क्या क्या राइट है, ठीक है, वही हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए अनपेड सेलर। तो देखो, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में क्या होता है, टू टाइप्स होता है। एक तो होता है राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, एंड दूसरा होता है राइट्स अगेंस्ट द बायर ऑफ गुड्स पर्सनली। ठीक है, तो एक होता है अगेंस्ट द गुड्स, अनदर होता है अगेंस्ट द व्हाट, अगेंस्ट द Buyer. buyer goods, against the buyers of the goods, that is personally. So let us discuss the first one. First one में क्या होता है, when the property, यहाँ पर भी two instances होता है, when the property in the goods has passed, and another when the property in the goods has not passed. So first we will discuss when the property in the goods has passed. Property means, you understand, that is ownership of the goods. The ownership of the goods, whether it is passed or not. Let us take the first instance, that is when the property in the goods has passed. Here you see there are what three options in the hand of the that is unpaid seller. Kya kya? First one is your right of lien. Right of lien means what? The right of that is retaining the possession of the goods. ओके, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी सर एक मिनट सर, हम लिखेंगे राइट ऑफ लियन मीन्स सर। हाँ, राइट ऑफ लियन मीन्स राइट ऑफ डिटेंशन ऑफ द गुड्स। राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ, राइट ऑफ डिटेंशन, यस, राइट ऑफ डिटेंशन ऑफ द गुड्स। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास तो गुड्स है, ओके, आपके पोजीशन में गुड्स है, तो आप क्या कर सकते हो कि उस गुड्स को तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है। समझ में आ गया? ये होता है राइट ऑफ लियन। सेकेंड वन इज योर राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, वी नीड टू सेंड द गुड्स थ्रू द ट्रांसपोर्टर। जैसे चाहे आप रेलवे में भेजो या कोई ट्रांसपोर्ट वाले के थ्रू में भेजो। सो यहाँ पर जब हम गुड्स इन ट्रांजिट, इसका मतलब गुड्स रास्ते में है एंड द गुड्स नेवर रीच द बायर, तो बायर के पास गुड्स नहीं पहुंचा, दैट इज इन ट्रांजिट। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यू हैव ऑल्सो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन द ट्रांजिट। तो जहां पर गुड्स है वहां पर आप उसको स्टॉप कर सकते हो। इसका मतलब गुड्स आके मूवमेंट नहीं करेगा, दैट इज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली? सर अगर पूरा पेमेंट नहीं दिया तो आप बीच में कैसे रख चाहे, सकते हैं वो तो। देखो, चाहे पूरा पेमेंट नहीं किया वो, चाहे पार्शियल भी पेमेंट नहीं किया, वो बात अलग है, लेकिन यू बिकम द अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के हिसाब से आपका ये राइट है, ठीक है। जब तक आपको पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा, तो आप यू कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। समझ में आ रहा है? एंड द सर लास्ट, हाँ, एंड द लास्ट पॉइंट इसका जो होता है, ये होता है राइट ऑफ रीसेल। तो राइट ऑफ रीसेल आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो? सपोज आपको पेमेंट नहीं मिला
और आपने रिमाइंडर भी भेजा, पार्टी के पास रिमाइंडर भेजा कि बायर को कि देखो मेरा जो टाइम पीरियड था, जितना टाइम पीरियड था आपको देने का, वो मैक्सिमम टाइम पीरियड आई हैव गिवन, एंड विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम आज यू आर नॉट टेकिंग द गुड्स, then I am reselling them, or the goods are is a nature of a perishable nature. Perishable का मतलब समझ रहे हो ना? ये जैसे कि यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर वेजिटेबल्स क्या होता है? बंद हो जाता है, डिकम्पोज। हाँ हाँ, डिकम्पोज हो जाता है। अगर ये डिकम्पोज हो जाएगा तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला, आपको पता है। इसीलिए आप क्या कर सकते हो कि वहां पर अगर ये देखते हो कि द नेचर ऑफ द गुड्स इज पेरिसेबल, और द यू हैव ऑलरेडी सर्व द नोटिस टू द कंसर्न पार्टी टू टेक द पोजीशन ऑफ द गुड्स, एंड स्टिल द पार्टी नेवर रेस्पॉन्डिंग टू यू, in that case, and you are either partly paid, or either you are partly paid or totally unpaid. In that instance particularly, you can also have a right to what, to resell the goods. कोई दूसरा पार्टी देकर आप बेच भी सकते हो। समझ में आ रहा है? Yeah, so sir, like there's one question, like हाँ 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 in case of partial paid goods, okay, so हाँ। like the notification must be made, or is it without even sending any notification that unpaid seller can? In this case, whenever the goods are of a perishable nature, so it is not possible to give notice to the concerned party, because if that party is not taking the goods, जैसे कि सपोज मानो मैं आपको 100 किलो टमाटर देने के लिए, टमाटर का मतलब समझते हो ना, जो होता है Yeah. टमाटोज, सो टमाटो सपोज सेल करने के लिए आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था, तो आपने भी एग्री किया था, लेकिन टमाटोज का तो कुछ टाइम पीरियड होता है भाई, ये कि क्योंकि ये एक वीक में बर्बाद हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, अगर मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, या कुछ पार्ट पेमेंट भी हुआ है लेकिन बाकी का पैसा मेरे पास नहीं पहुंचता है, सो इट इज माई ड्यूटी टू कम्युनिकेट यू। अगर कम्युनिकेट भी नहीं कर पाया और ये पेरिसेबल नेचर का प्रोडक्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कोई रीसेल कर दे, वरना ये बर्बाद हो जाएगा। ओके, No, सो yeah, completely got that point. But is it only to the perishable items, or is it for all the items that यस, I might or might not send the notification and then sell it out? yes, in case of a perishable product is of a perishable nature, then you may or may not send the notice to the concerned party, but you can exercise the right of resale. But in other cases, if it is a product is not of a perishable nature, then you are supposed to give the notice, and if the party never respond to your notice, then you can exercise the right of a resale. Okay. Is that clear? Yeah, absolutely. Okay, so these are the rights when the property in the goods has passed. Another instance when the property in the goods has not passed. Okay, so here there is only one option, as a property in the goods has not passed, then there is one right, that is right of withholding the delivery. इसका मतलब क्या होता है, जो delivery of the goods को आप withhold करके रख सकते हो, ये एक ही राइट आपके पास है। सर इसका मीनिंग थोड़ा बताइए अगेन। हाँ, ये इसका मतलब अभी देखो क्या है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, लेकिन आप आइदर पार्टली पेड और नॉट पेड। इसका मतलब आप पूरा पैसा नहीं मिला, या आधा कुछ पैसा मिला है लेकिन बाकी का पैसा नहीं मिला। और यहाँ पर क्या हो रहा है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज आल्सो नॉट पास, इसका मतलब ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अभी क्या आपके पास क्या राइट होता है, आपके पास राइट होता है टू विथहोल्ड द डिलीवरी। इसका मतलब डिलीवरी को आप बंद करके रखो, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक डिलीवरी नहीं करोगे। ठीक है, तो these are the rights of unpaid seller against the goods. Now we'll discuss other type of that is a right against the buyer of goods personally. ओके, अभी क्या होगा, जो बायर ऑफ गुड्स के अगेंस्ट में आपके पास क्या क्या राइट्स है। ये तो पहले जो राइट्स हमने डिस्कशन किया, दैट इज अगेंस्ट द गुड्स, एंड व्हाट आर द अदर राइट्स अगेंस्ट द बायर ऑफ द गुड्स। फर्स्ट इज योर राइट टू स्यू फॉर प्राइस। इसका मतलब जितना प्राइस है आपका उतना प्राइस के लिए, टोटल प्राइस के लिए, अगर टोटल पैसा आपको नहीं मिला है, अगर पार्टली पेमेंट हो गया है, तो जो अनपेड प्राइस है उसके लिए आप
sue कर सकते हो in the court of law. हो गया फर्स्ट. सेकेंड वन, राइट टू sue for the damage. इसका मतलब क्या हो रहा है? अभी सपोज आपने कुछ पार्ट पेमेंट रिसीव किया है और जो गुड्स आपके पास है उस गुड्स के लिए आपको बहुत कुछ परेशानी लेना पड़ रहा है, जैसे कि वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर थिंग्स, एंड ड्यूरिंग दैट सम डैमेजेस हैव बीन मेड, सो यू कैन आल्सो sue, you have a right to sue for the damages. ठीक है. अनदर इज राइट टू sue फॉर इंटरेस्ट. ये जो राइट टू sue फॉर इंटरेस्ट है, एक्चुअली इफ देयर इज अ प्रोविजन इन द contract of sale regarding the payment of interest, if there will be any delay in the payment, then only you can exercise this right. Otherwise this right will be not available. That is why the right to sue for interest is possible only when there is a condition in the contract of the sale. And another last one is reputation of the contract before the due date. अभी क्या हो रहा है, आपने तो उसको बेच दिया, लेकिन जब प्राइस आपको नहीं मिला और उसका जो ड्यू डेट है, within due date also you can also cancel the contract or you can reject the contract or dismiss the contract. That is what called a repudiation of the contract before the due date. These are all the rights which are available against the buyer of the goods personally. Right? Is that okay? Sir. Yes. Yes, sir. Okay, okay. Then actually we have covered this Sales of Goods Act. So you can show the next PPT जो दिया था Unit 5 का. Please share that PPT. सर इसमें और है ना राइट अगेंस्ट गुड्स. राइट्स अगेंस्ट गुड्स ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है ना? नहीं, राइट ऑफ लियन, टर्मिनेशन ऑफ लियन. नहीं, देखो नहीं आप इतना सारा नहीं. जो राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स एंड राइट ऑफ रीसेल, दीज आर द फ्यू राइट्स अगेंस्ट द गुड्स व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द अनपेड सेलर. एंड थोड़ा बता दीजिए ना सर, प्लीज टेल ना सर. क्या बताऊं? जो राइट अगेंस्ट द गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46, when the buyer has not paid the full or partial price of the goods supplied to him, the seller who has transferred the ownership of goods, the buyer has the following rights with regard to the goods. Those only I have discussed. That is right of lien, right of stoppage, and a right of resale. And in detail, actually, in detail, so much explanation is not required. These are the things how I have made you understand. You can write so much, and if you write like that, then your entire time will be consumed in the exam in writing only one answer. Okay, because so minute questions will not come. The right of an unpaid seller. If the question will come regarding the right of an unpaid seller, then you will write the two rights. That is a right against the goods. Another is a right against the buyer. Okay. So here you see the right against the buyers of the goods personally, and under that you will discuss when the property in the goods has passed. Under that you will write right of lien, right of stoppage of goods in transit, and right of resale. And in the second part, that is when property in the goods has not passed, they are right of withholding the delivery. So these are all in the rights against the goods. Another, that is the rights against the buyer of the goods personally. Here you can write that is right to sue for price, right to sue for damages, and right to sue for interest and repudiation of the contract before the due date. So these are the few rights which can be exercised by the unpaid seller against the buyer of the goods personally. Is that right? Sir. Okay. Now please go to the next PPT, which I have already sent through mail to one of your. So please put that slide. Yeah, it's on. It's already on the screen. Can someone confirm it's visible to you? Yes, visible. Okay. visible. Yes. It's visible now. So now we'll discuss that is Foreign Exchange Management Act FEMA, right? ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्चुअली पहले ये क्या था पता है आपको?
FEMA ka what is the previous gesture? The previous gesture in the previous gesture it was FERA. Okay, FERA, that is Foreign Exchange Regulation Act. अभी ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. सो इससे पहले ये था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. Actually, it came into force in 2000, the first day of the June 2000, and it was introduced. Why? Because the FERA never fit with the post liberalization policy. जो post liberalization हुआ, इसका मतलब liberalization के बाद का जो policy गवर्नमेंट का जो policy रहा, उसके साथ ये fit नहीं हुआ FERA. That is why they need certain changes, and accordingly the changes have been made. और ये हो गया आपका FEMA. And this is an act which consolidate and amend the laws relating to the foreign exchange with the objective of facilitating the external trade and payments. जितना आपका जो external trade होता है and payments होता है, ये सब सभी को include करता है. That means what it is controlling all the foreign exchange transactions, right? तो अभी देखें कि उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ये जो फेमा जो है इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है. फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है इसका टू यूटिलाइज द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इफेक्टिवली. क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आपको पता होगा जरूर. सो इसमें क्या होता है कि हमारे ईच एंड एवरी कंट्री का एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है. And day by day what happened, हमारा जो foreign exchange reserves that has been reduced. Foreign exchange अगर reduce होता है तो it affects our economy severely. That is why to retain the foreign exchange more and more foreign exchanges, we need to control strictly on the payments particularly. And these whenever we are purchasing from the other countries, that means whenever we are importing from other countries, at that time we need to make the payment to them, and definitely the payment will be made in the foreign exchange because they will not receive our currency. So in this place, how to actually hand over them, or how to make the payment, and how to maintain all these, because every day there is numbers of foreign transactions. That means exports and imports. In the exports, we are supposing to make the payment in the foreign exchange, and whenever there is the import, then we are getting foreign exchanges. But most of the time what is happening, our imports are more than the exports. In that case, actually, there is a shortage of your foreign exchange. So now, actually, this FEMA is framing the rules by which they will maintain a balance in the foreign exchange. And this act is also applicable to the all part of India and the all branches and offices and agencies who are also trading outside India. But these institutions should be controlled by a person who is in the resident of India. That means it is applicable. This Foreign Exchange Management Act is also applicable for all the branches and offices and agencies which are outside India, but they are owned and controlled by a person who is a resident of India. Is that clear? And the head office of this the controlling authority of this FEMA is your enforcement directorate. Otherwise it is called your ED. Generally, people they are calling it as ED, and this is located in your New Delhi, and it is headed by a director, right? And it is very important to on foreign trade and to maintain a good relation with the other countries. Actually, this FEMA not only controlling exports and imports of foreign exchanges, but it is also helping to maintain a good relation with the other countries.
Sir, import exchange, import and export, if अगर import ज़्यादा है, export कम है, तो how they will balance the currency? Actually, in that case, actually they will defer the payment. Defer the payment का मतलब क्या होता है? Whenever the country is supposed to make the make the payment in the foreign exchange, they will see that whether there is a balance in balance or not. If there is no balance, then the payments can be deferred. Okay, then the payments can be deferred, and the part payment also can be made. That according to the conditions of the FEMA. You cannot Not make. understood. हाँ, सर आपको ज्यादा चीज मंगाया, कम चीज दिया तो आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हाँ, हमारे पास करेंसी नहीं है तो उसको क्या बोले, आप समझ में नहीं है। हाँ, एक्चुअली उसको क्या कर सकते हैं, जो पेमेंट होता है ना, पेमेंट को डिफर करेंगे। डिफर करेंगे का मतलब, अभी हमारे, आप सोचिए कि आपके पास अभी सपोज 5,000 है, ठीक है, लेकिन आपको जरूरत है कुछ पेमेंट करने के लिए, आपको 7,000 जरूरत है, तो आप क्या करते हो, बताते हो कि भाई ये 5,000 अभी ले जाओ, बाकी 2,000 हम अरेंज करके देते हैं, यही बोलते हैं ना हम। दिस इज व्हाट हाँ यू आर डिफरिंग द पेमेंट। इसका मतलब आप पेमेंट को कुछ पार्ट पेमेंट करके बाकी का जो पेमेंट है उसको आपने डिले कर दिया, यही होता है डिफरिंग द पेमेंट। ओके, तो कंट्री वही करता है कि जब पेमेंट्स करते हैं तो फुल पेमेंट ना करके उसको पार्ट पेमेंट करते हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर द फॉरेन एक्सचेंज to be in the reserve. Whenever the foreign exchanges will come to the reserve, then they will spare it. That means that the policy will be framed accordingly, so that there will be no shortage of the foreign exchanges, right? Yeah, so one more question. So basically, any transaction that takes place between a buyer and seller, right? Yes, So, yes. so, So so here the agreement will be made between the buyer and the seller, but whenever the payment will be there, regarding the payment, and whenever the payment will be made in the foreign exchange, if it will be made, if they will accept the payment in Indian currency, then no issue. But if they will receive in the foreign exchange, particularly of that foreign country, whether it is in the reserve or not, it is the duty of the FEMA. Accordingly, you are supposed to give one application to the FEMA that I have I have imported so much of goods, and for this payment shall be made. Now the FEMA will actually give a direction that the payment will be made in this way. okay, Okay. so that's Sir, what, like, कोई industry, sir, suppose some industry will sell the item to some other firm in foreign country, then Yeah. some industry will receive some item from foreign country, then Yeah. in that case payment mode, how it will be made? It will be through FEMA. Yes, if it is if the party accept the payment of Indian currency, then no issue. But if they will ask for the payment in the foreign currency, then it will be through FEMA. It will be carried through the FEMA. You cannot directly control that. No, sir, my point of telling, suppose Yeah. any industry in India, they want Yeah. to export, then Yes. what is the process? Through Uh, FEMA. Now you see, actually here, if you will receive the payment in your currency, they will, that means it will be your a foreign currency for them. Is that right? Sir, Why? Because they want to make the payment in their currency, but you will not accept their what you need cash. That means sir, their currency what is required to be converted into cash of our country. That means INR, Indian rupees. So ये इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कैसे होगा? इसका मतलब वो जो फॉरेन करेंसी आएगा इंडिया, और वो फॉरेन करेंसी कन्वर्ट होगा आपके करेंसी में, राइट? So here, sir, because you will not receive their currency, whether you will receive their currency, no, you will receive the INR. Now the yes, question is that who will receive the payment? Now it will be, entire transaction will be done through the FEMA.
so that whatever the foreign currency they will make the payment, this will come to the what foreign currency reserve of our country, and our country will convert that into INR, and the payment will be made to you. समझ में आ गया? Okay. And for this purpose, actually for this purpose, the FEMA has authorized certain institutions, financial institutions. These institutions are called money changers. What? Money changers. You understand? These are called money changers. These money changers are authorized by the FEMA. So that whenever you want to do this type of a transaction, you should do the transaction through them. So these are authorized agents. These are the authorized agents of the FEMA. That means whatever the transaction done through them, that is done through the FEMA. Okay. Okay. So we'll go to the next. That is regarding what are the essential features of this act. Here you see the activities such as the payments which are made to any person outside India or received from them, along with the deals in the foreign exchange and the foreign securities. Actually, foreign securities, that means if you want to purchase the foreign securities, then how you will purchase it? For that purpose, you will make the payment in Indian currency, but they will receive the foreign currency. तो हमारे कंट्री का करेंसी रिजर्व से जाएगा ना, so that here the transaction also carried through the FEMA. Okay. And second is the restrictions are imposed on the here. Actually, who will pay? That our currency will go means that suppose कोई इंडस्ट्री का आइटम जो सेल हुआ, उसका आइटम के लिए फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, वही ना? नहीं, सपोज आप अगर यहाँ से कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गुड सपोज सेल कर रहे हो कोई दूसरा कंट्री में, ठीक है, तो जो दूसरा कंट्री में भेज रहे हो, तो उसका जो प्रोसीड्स जो आपको मिलना है, आपको पेमेंट मिलेगा ना अभी, तो आपको पेमेंट किस में मिलेगा? फॉरेन करेंसी में, उसी कंट्री का करेंसी में मिलेगा। उसी कंट्री का करेंसी तो आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपको इंडियन करेंसी चाहिए। So these foreign currency will come through the FEMA, that means through the authorized agent जो होते हैं आपका, जैसे कि बताया मैं मनी चेंजर्स। So ये जो मनी चेंजर्स के थ्रू में आपका आएगा, इसका मतलब all the payments will be made through the money changers, and the money changers will convert them into Indian currency, and the Indian currency will be paid to you. This is the procedure. Okay. And whenever actually we need to suppose import the goods, अगर बाहर से कुछ import करे, कोई industrial product suppose आप import कर रहे हो, and at that time you are supposed to make them payment, and they will not accept your Indian currency, because they want what their currency. And here you see what you that amount, that currency, that means their currency will be what converted into your currency, and you will make the payment. आप एग्जाम्पल लेके चलो, सपोज आप पेमेंट कर रहे हो यूएसए में पेमेंट कर रहे हो, तो यूएसए में अभी सपोज 84 या 86 है आपका डॉलर का प्राइस जो होता है, लेकिन आपको जो पेमेंट करना है, उसको जो पेमेंट करना है, जितना डॉलर पेमेंट करना है, उसी डॉलर को मल्टीप्लाई करोगे इंडियन करेंसी में, जो प्राइस होता है, दैट यू विल मेक द पेमेंट थ्रू द मनी चेंजर्स। और मनी चेंजर्स को पेमेंट करने से क्या होगा? थ्रू द मनी चेंजर्स द पेमेंट विल बी मेड टू देम इन द देयर करेंसी, दैट इज यूएस डॉलर्स में उनको पेमेंट हो ही जाएगा। ठीक है? ओके। एंड हियर यू सी व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द फीचर्स, यहाँ पर जो एक फीचर में बताया कि जैसे कि फॉरेन सिक्योरिटीज, अगर कोई आप फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो फॉरेन सिक्योरिटीज, जैसे कि कोई एप्पल कंपनी हो या कोई ऐसा कुछ कंपनी का सिक्योरिटीज में परचेज करना चाहते हो, तो परचेज करोगे। सिक्योरिटीज क्या होता है सर? फॉरेन सिक्योरिटीज का मतलब जो शेयर्स होते हैं, तो कोई फॉरेन शेयर्स जो होते हैं फॉरेन कंट्री का, इसका मतलब यूएसए का कोई शेयर, जैसे कि एप्पल का एग्जांपल दिया हो, या टेस्ला का, ऐसे कोई कंपनी का शेयर्स होता है जिसमें कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है? तो इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या, दैट कंट्री विल रिसीव देयर करेंसी,
but you have Indian currency. Now you are supposed to make the payment in Indian currency, and that will be converted into their currency, and the payment will be made to them. So here directly we cannot make them payment. So here also the transaction should be carried out through the your authorized agents of the FEMA. That means here what a FEMA having a grip, that is restriction, and whatever the rules and regulations will be made, that will be made by the FEMA to control these activities. Why? Because you see foreign reserves are what always there is a limited foreign currency reserve in our hand. That is why it is the duty of the FEMA to see how they will manage that. Actually, Foreign Exchange Management Act, that means they will manage it. At what time to make the payment, when to make the payment, how much to make the payment. But for that, actually, no delay will be there in the transaction. Because whenever you have made the payment in Indian currency to the money changer through the FEMA, then it is their duty to settle how the payments will be made to the concerned party. Is that right? Yes, yes. And another feature is that there restrictions are imposed on the resident of India who carry out transaction in foreign exchange, foreign securities, or who own or hold immovable property abroad. Suppose foreign country में कुछ आप कुछ प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, जैसे कि सपोज आप यूएसए में एक सपोज मकान खरीदना चाहते हो, वो हो जाता है कोई सपोज $10 लाख होता है, तो $10 लाख जब पेमेंट करोगे, आपके पास पैसा है, आप इंडियन करेंसी में पेमेंट करोगे, लेकिन आपके पास तो यूएस डॉलर नहीं है ना, तो अभी जो आप क्या करोगे, आप इंडियन करेंसी में पेमेंट कर दोगे। तो पेमेंट करने के बाद अभी क्या फेमा का ड्यूटी है, वो देखेगा कि भाई ये तो इंडियन करेंसी तो ये आदमी मुझे दे दिया, लेकिन अभी देखना है कि उसको जितना फॉरेन करेंसी देना है इतना हमारे पास स्टॉक में है या नहीं। अगर स्टॉक में नहीं है तो कैसे उसको मैनेज करे, उसको कैसे पेमेंट करे, हाउ मच टू पे इमीडिएटली, हाउ मच दे विल paid later on, or what the plans they will prepare, accordingly they will negotiate it so that the concerned party will get the payment. But for this purpose there will be no delay in the जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिले नहीं होगा, राइट? Okay. And here you see, unless there is a general or specific permission from the FEMA, then the FEMA restricts the transactions involving the foreign exchange and the foreign securities and the payments from outside the country to the India. And the transactions should be made only to an authorized person, जो कि मैं बता दिया था, authorized person होता है, money changers and some other agents are also there. Through them only the transactions can be made, so that actually इसका पूरा exact track FEMA के पास है होगा कि कितना ट्रांजेक्शन हमारा, कितना पेमेंट हमें देना है, कितना हमें पेमेंट मिल सकता है. So accordingly they will frame the rules so that they will manage the foreign exchange reserve of the country. Is that okay? Done. Okay. Now we'll go to the next slide. That is okay. Regarding the applicability, the FEMA, that is the Foreign Exchange Management Act, is applicable to the whole of India and equally applicable to the agencies and the offices which are located outside the India, particularly which are owned and managed by an Indian citizen. And particularly if we'll broadly speak, then it covers three different categories of persons. So what are these three different types of a person? First one is your person, second one is a person resident in India, and third one is your person resident outside India. Then we need to understand exactly what is person. Person का मतलब क्या हो सकता है? So please go to the next slide. That is for the purpose of a provision of this act, particularly FEMA, the persons can be, first one is an individual. Individual का मतलब समझते हो, जो कि natural person होते हैं. And the second one is your HUF. HUF क्या पता है आपको? Hindu Undivided Family. And third one is a company. Company means it should be a registered company.
it may be under your Indian Companies Act 1956, and even under the Indian Companies Act 2013, or any earlier Companies Act also. And the next one is your firm. Firm means particularly a partnership firm. Next is your AOP. AOP means what? Association of persons or body of individuals. AOP and BOI. So body of individual and association of persons, इसमें क्या difference आपको पता है? And नहीं AOP, सर, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. देखो जो एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन्स होता है, ये पर्सन्स में द ऑल इट मे बी व्हाट ऑल मे बी योर नेचुरल पर्सन और अदर पर्सन्स, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ओनली व्हाट आर्टिफिशियल पर्सन्स कैन बी द मेंबर, दैट इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में क्या हो सकता है? इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकते हैं, फार्म भी हो सकते हैं, एचयूएफ भी हो सकते हैं. ओके, so all these can be. So this is this also coming under the definition of your person, that is AOP and BOI. And the next one is your every artificial juridical persons not falling within the any of the preceding sub clauses. इसका मतलब पहले जितना डिस्कशन किया, इसमें इसी वैरायटी में जो कोई नहीं आता है, और दैट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. आप जैसे कि लेकर चल सकते हो यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी. उत्कल यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है. तो दिस कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन. And another, that is any agency, offices or branch which is owned and controlled by such person. इसका मतलब कोई ब्रांच ऑफिस हो या कोई हेड ऑफिस हो, कोई एजेंसी ऑफिस हो, if they are owned and controlled by any of the above, जो पर्सन का डेफिनेशन में डाला है अभी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सबका any agency office या any branch which is owned by them shall also be coming under this definition. तो ये पर्सन का डेफिनेशन ये समझ में आ गया? पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है? Anybody having any doubt in this? सर और एक बार बोल दीजिए. हाँ, अभी देखो तो पर्सन का डेफिनेशन में जनरली पर्सन का मतलब हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि पर्सन का मतलब होता है व्हाट अ नेचुरल पर्सन, जैसे कि ह्यूमन बींग्स. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज ह्यूमन बींग्स, many other things are also included in the definition of a person. So first is an individual, that is a natural person. Second one is your HUF. HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जो पहले हमारा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वहां पर क्या होता है? एक कर्ता होता है who is called the head of the family, and the members of the family, they are called the co-partners. Okay, and the entire business is called your Hindu undivided family. Okay, and the another form is your company. Company means a joint stock company. The joint stock company may be framed under the Indian Companies Act 1956 or Indian Companies Act 2013 or of any earlier act. अर्लियर एक्ट का मतलब 1956 से पहले भी था, इंडियन कंपनीज एक्ट था 1925 में. ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था, एट दैट टाइम आल्सो देयर वाज अ कंपनीज एक्ट. सो ये किसी भी कंपनीज एक्ट के अंडर अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, सो दैट इज कमिंग अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये कंपनी के डेफिनेशन में आ गया. एंड द नेक्स्ट वन इज ए फार्म. फार्म का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फार्म बेसिकली. ओके, पार्टनरशिप फार्म क्या होता है? Whenever what more than more than one person, that means two or more than two persons, they are joining with the purpose of creating some business with some investment, and whatever the profits they are getting, profits or loss, whatever they are getting, they are sharing between themselves. That is a partnership firm. Okay, and another is your association of a person और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में बताया, यहाँ पर पर्सन में जो एसोसिएशन होगा अब किसका? पर्सन. ये पर्सन कौन हो सकते हैं? इसमें नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं. लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सारे मेंबर्स जो होते हैं वो आपका होते हैं जो नेचुरल पर्सन. ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी द मेंबर्स ऑफ अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, सो ये हो गया आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स.
Next one is every artificial juridical person not falling within any of the preceding subclause. इसका मतलब पहले जितना डिस्कशन किया है इसमें से अगर किसी में भी नहीं आता कोई एक आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि मैं एग्जांपल बताया आपको उत्कल यूनिवर्सिटी, ये एक आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन है. ओके, दैट मीन्स व्हाट it is invisible but it has a certain certain existence. That means although it is not individual but it is considered as an individual according to the eyes of the law. And last one is that is what any agency, office or branch which is owned and controlled by such persons. By such persons means whatever we have discussed previously, all these persons. Is that clear? A person का definition ना कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया. एक्चुअली इट इज क्रिटिकल थिंग टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन. सर कहीं पर डाउट है कुछ? नहीं सर. Okay, so let us go ahead. That is the second one, that is a person resident in India. तो फर्स्ट वन तो पर्सन हम डिस्कशन कर दिया. यहाँ पर सेकंड में आ रहा है द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. दैट मीन्स हु आर द पर्सन कॉल्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पर क्या हो रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन द assessment year we need to understand assessment year and a previous year. For understanding the person resident in India we need to understand two things, that is assessment year and a previous year. तो असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है एंड प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीज हमें समझना है. एटलीस्ट आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एज यू आर एग्जीक्यूटिव, सो मोस्ट ऑफ यू आर व्हाट पेइंग और फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स. मोस्ट ऑफ यू आर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. तो इनकम टैक्स रिटर्न में आपका मेंशन होता है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. ये दोनों तो आपको समझ में आया होगा ना, उसमें कुछ डाउट है? that's good. सबको बताए तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, और आई नीड टू डिस्कस इट. दीजिए सर. यस यस, it is not audible. Sir, you please tell again, sir. ओके ओके ओके, ठीक है, तो मैं डिस्कशन कर देता हूँ. असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है. एक्चुअली असेसमेंट ईयर इज द ईयर, assessment year is the basically it is the financial year in which the assessee is the income of the assessee is supposed to be assessed and taxed. इसका मतलब क्या हो रहा है, सपोज मिस्टर एक्स का जितना इनकम हो रहा है एक साल में, उसका जो नेक्स्ट ईयर होता है, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर होता है, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में उसका कितना, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में कितना इनकम हुआ था, उसी इनकम के हिसाब से उसका टैक्स कितना होता है वही कैलकुलेशन होता है, और वो पार्टी पेमेंट करता है उतना टैक्स. एंड प्रीवियस ईयर में क्या होता है, प्रीवियस ईयर में दैट इज वो जो एसएससी होता है, द एसएससी मेक्स द इनकम. इसका मतलब एसएससी का इनकम होता है प्रीवियस ईयर में एंड टैक्स होता है असेसमेंट ईयर में. प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर होता है असेसमेंट ईयर. अभी सपोज आप मान के चलो, सपोज 23-24, ये जो 23-24 जो हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, इसको अगर हम बताएंगे कि ये प्रीवियस ईयर है, तो इसी ईयर का जो इनकम होगा द एसएससी विल सब्जेक्ट टू टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 24-25 में. समझ में आ रहा है? 23-24 का जितना इनकम होगा उसी इनकम टैक्स होगा द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 24-25. सो 24-25 हो जाएगा असेसमेंट ईयर एंड 23-24 हो जाएगा प्रीवियस ईयर. ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ या नहीं? Yeah. Whether everybody able to understand it? Actually here you see the assessee makes the income in the previous year and it is supposed to be taxed in the next financial year, which is called the
which is called the assessment year. Okay, that means we are making the income in the previous year, and for this income of a previous year, we are supposed to be taxed in the next financial year, which is called the assessment year. Is that okay? Sir, Everybody? Yes, sir. Okay. Now you see a person who has been residing in India for more than 182 days in the previous year. प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पर हमें जैसे पता हो गया कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आरसीसी या ये जो पर्सन होता है, इफ द पर्सन इज रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days, देन ही विल बिकम ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. समझ में आ गया? तो 182 डेज से अगर कम रह रहा है इंडिया में, सो ही विल बी नॉट ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो a person to be resident in India must stay in India during the last financial year, that is during the previous year, at least for 182 days. Clear हो गया? Then any person Yes, or sir. body corporate which is registered or incorporated in India, अगर नहीं any सपोज ये रहा तो क्या होगा सर? क्या शॉर्टेज हुआ? Suppose a person stayed 182 days in India, then हाँ. what will be done? Then he will become a person resident in India. So he should be liable to pay the tax. That means now he is subject to tax. Okay. Whenever we'll discuss regarding, actually we need to understand these all things. Why? Because whenever certain provisions or restrictions will be made, this is according to their residential status, whether that is a resident or whether that will be non-resident. On that basis, the decisions will be taken. Now you're able to understand on the basis of the actually your residential status, these restrictions which will be put by the FEMA. For that purpose, they will consider whether you are a resident in India or non-resident, like that. On that, what they will take the decisions on this basis. And even for the purpose of taxation, whenever the taxation authorities, they are calculating your tax liability, they are also finding the tax liability on this basis, whether you are resident in India or not. Right? Sir, this is applicable for a foreigner, huh? No. This is not only applicable for a foreigner. This will also applicable for a Indian citizen also. If you are सपोज यूएस में सिटीजनशिप ले लिया तब देखो, आप किसी कंट्री का दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप लो या ना लो, बट सपोज यू आर ए इंडियन, understand, you are a Indian, but you are not staying for 182 days in India during the last previous year. Okay, then you will not be a person resident in India. तो वहां पर जो टैक्सेशन का जो प्रोविजन है, जो पॉलिसीज है, आपके लिए अलग होगा. समझ में आ रहा है? सो ऑन दिस बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, इसको रेसिडेंशियल स्टेटस बताते हैं. ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाता है, चेंज हो जाता है ना. कभी कभी देखो, आप इंडियन सिटीजन हो, सपोज लास्ट ईयर में आप थे, इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर से पहले जो प्रीवियस ईयर था, ड्यूरिंग दैट यू आर इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days. दैट मीन्स एट दैट टाइम यू आर ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. बट ड्यूरिंग द लास्ट प्रीवियस ईयर में क्या हुआ कि आप दूसरा कोई फॉरेन कंट्रीज में बहुत घूमने चले गए, तो इतना घूमे कि आपका जो इंडिया में आपका 182 डेज से कम हो गया. समझ में आ रहा है ना? आपका स्टे इन इंडिया 182 डेज से कम हो गया. तो कम हो गया तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? आपका जो आप उसी टाइम नॉट रेसिडेंट इन इंडिया हो जाओगे. समझ में आ रहा है ना? सर ओके.
So now the next thing, that is But any, in this case, sir, FEMA को उसको connection क्या है? वो tax तो sales tax, income tax को देना पड़ेगा ना? What is the role of FEMA? yes, I am making you understand. Whenever the FEMA makes certain rules and regulations, they are also considering the residential status. Okay, while they are framing the rules and regulations for the foreign exchange reserves and anything, at that time also they are putting the conditions. क्योंकि वो rules बनाएंगे ना, rules बनाएंगे किसके लिए क्या होगा. So at that time also, on the basis of the residential status, they will also make certain rules. इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा. ठीक है. Sir. हाँ, और क्या हो रहा है देखो, और किसी को बता सकते हैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. इफ एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. तो इंडिया में अगर कोई पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड हुआ, तो यहाँ पर पर्सन का मतलब तो नेचुरल पर्सन नहीं होगा, तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गए, यानी कि कंपनी होगा, फार्म होगा, कुछ भी अगर होगा, दैट शुड बी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. ठीक है. इसको क्या होना है, इसको इंडिया में अगर रजिस्टर्ड होना होगा. अगर रजिस्टर्ड हो गया तो ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसका स्टेटस हो जाएगा. और क्या हो सकता है, एन ऑफिस और ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया. Okay, I think we have crossed the time limit. Our class is supposed to be closed by 9:15 and it is already 9:38. And Yes, sir. I have also another class in the department also. So Sir, no problem, sir. Next class we'll read. we'll most probably, I think the next class will be the last class. Whatever the portions left, we will discuss in the next class. Okay. So thank you so much. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. I am leaving the class. Thank you, sir. Thank you, sir.